Let me tell you a small story. एक छोटी सी कहानी आपको बताऊंगा। Amen. And this will encourage you. We'll sing a song and then we'll finish. और ये कहानी आपको जरूर प्रोत्साहित करेगी। उसके बाद हम गीत गाएंगे और फिर खत्म करेंगे। Once upon a time, there was a man who used to distribute pamphlets about Jesus Christ. और एक समय की बात है, एक व्यक्ति था जो हर जगह जगह जाके परमेश्वर का वचन पैम्फलेट्स के रूप में बांटा करता था। And as he used to distribute, और जब वो उस ट्रैक्ट को बांटता था, he was once in a train. एक बार वो ट्रेन में चढ़ा। He was distributing the pamphlet. और वो हर जगह ये पैम्फलेट बांट रहा He था। distributed to one woman who had a child. एक बच्चे की माँ को इस व्यक्ति एक ने माँ को दिया जिसके हाथ में एक बच्चा था। ओके। Amen. And as he gave that, और जब उन्होंने वो दे दिया, this woman started abusing this man. और गालियाँ बकने लगी है औरत उस And she started saying that why are you distributing और pamphlets? फिर ये कहने लगी कि क्यों तुम ये बांट रहे हो? She said there is nobody like Jesus. और यीशु के जैसा कोई नहीं है। There is nobody like Jesus. यीशु है ही नहीं। हाँ, amen. And there is nothing known as God. और परमेश्वर नाम का कुछ होता नहीं है। Amen. And she started getting very angry. और बड़ा गुस्सा आने लग गया उनको। There were people around. और उनके चारों तरफ लोग They started also getting angry. उनको भी गुस्सा आने लग And they गया। started beating up this old man. और इस बूढ़े व्यक्ति को मारने लगे सब। He was bleeding. और उनसे खून आने लगा। Oh, they were beating him up. और बहुत मारा। This woman also started abusing. और ये औरत और भी गालियाँ बकने लगी। I mean, people got very against this old man. और इस बूढ़े आदमी के खिलाफ सब लोग हो गए। Suddenly, there was a young child of this mother. और ये जो बच्चा, छोटा सा बच्चा इस माँ का, he just stood up. वो खड़ा हो गया। And he said, "Mummy." और चिल्लाने लगा, मम्मी। And he started saying, "Mummy." Mummy. And he said, "Mother." मम्मी, Mother. मम्मी, Mother. मम्मी। And as he started saying that, और जब वो ऐसे बोलने लगा, amen, the woman just knelt down. ये औरत अपने घुटनों पर आ गई। And she started weeping. और रोने लगी। And she started crying. और रोने लगी। And she stared crying. और भी भिलकने लगी। This old man looked at her. और ये बूढ़ा व्यक्ति Every person was looking at her. ये सब लोग उसको देखने लगे। And he said, the old man said, why are you weeping so much? Why are you crying so ये बूढ़े much? व्यक्ति ने पूछा कि आप इतना रो क्यों रही हैं? Just a moment ago you were abusing me, now you're crying. What happened? एक सेकंड पहले तो आप मुझे गालियाँ दे रही थी, अब क्यों आप रो रही हैं? And this is what she said. और इस प्रकार से उन्होंने कहा, Oh, my child was dumb ever since he was born. Today for the first time he spoke. ये मेरा बच्चा जन्म से ही गूंगा था, आज पहली बार उसने अपने मुंह से कुछ बोला है। This is the first time he started speaking. पहली बार उसने मुंह से कुछ अपने शब्द निकाला है। Oh, she lifted up her hand. और उसने अपने हाथों को उठाया and bent towards that man. और उस व्यक्ति की ओर झुकी। Said, I want to know your God. और कहा कि मैं तुम्हारे परमेश्वर को जानना चाहती हूँ, मुझे माफ करें। Oh, that man said, Jesus is for everyone. और उसने इस प्रकार से कहा कि यीशु मसीह सबके लिए है। Every time we are put down, God is taking a position to lift us up. हर बार हमें नीचे गिराया जाता है, परमेश्वर तैयारी कर रहा होता है कि हमें उठा ले। I mean, today I want to encourage you once again. आज मैं आपको फिर से प्रोत्साहित Wherever you are, आप जहाँ कहीं don't give up, people of God. बिल्कुल हार मत मानिए। I mean, if you are down, अगर आप आज नीचे गिराए, God is going to lift you up. परमेश्वर आपको उठाएगा। He knows you, He loves you. वो आपको जानता है, वो आपसे बेहद प्यार करता है। We're going to sing one song. If you know this song, sing with us. हम एक गीत गाने जा रहे हैं, अगर आप इस गीत को जानते हैं तो जरूर हमारे While you're watching, do share this video और also. जब आप इसे हमें देख पाते हैं तो जरूर इस वीडियो को शेयर Let's sing this beautiful song. It says, He is my everything, He is my all. और ये गीत इस प्रकार से है, तू मेरा सब कुछ, तू मेरा ही। Amen. And as we sing this song, this is going to bless us. और जब हम इस गीत को गाते हैं, ये हमें We'll sing it first in English, then we'll sing it in Hindi. पहले हम इसे इंग्लिश में गाएंगे, फिर हिंदी में। So those who all know English, join with us. Those who know Hindi, join with us. इंग्लिश जो लोग जानते हैं हमारे साथ इंग्लिश में गाइएगा, और जो लोग हिंदी जानते हैं वो हिंदी में गाइएगा। Amen. Let's sing that. He is my everything. He is my all. He is my everything, both great and small. He gave His life for me, made everything new. He is my everything. How about you? Like honey in the rock, sweet honey in the rock. For He tastes like honey in the rock. Oh, taste and see that the Lord is good. For He tastes like honey in the rock. Hindi में तू है मेरा प्रभु, तू सर्वश्रेष्ठ है, तू है मेरा प्रभु सबसे ऊंचा, अपना जीवन तूने कुर्बान किया,
तू सर्व मेरा प्रभु सबसे ऊंचा, शहद से भी ज्यादा, शहद से भी ज्यादा, यीशु तू है सबसे मीठा, चक्कर देख लिया तेरे उस प्यार को, यीशु तू है सबसे मीठा, कहिए चक्कर देख लिया तेरे उस प्यार को, यीशु तू है सबसे मीठा। Thank you, Abby, for those शहद के bottles. थैंक यू फॉर द हनी बॉटल्स अभी। Amen. Thank you once again, people of God. Always a blessing to join all of you. और आप सबके साथ जुड़ना हमेशा ही बहुत खुशी और आशीष का This is a heart-to-heart time. I just want to let you know as we leave, please don't be discouraged. ये दिल से दिल का जो ये समय है, इस समय मैं आपको यही कहना चाहता हूँ If कि he- बिल्कुल भी आप हार मत मानिए। When Jesus is going to come back, क्योंकि जब यीशु मसीह वापस आएंगे, all the rewards would be given. सारे प्रतिफल आपको मिल जाएंगे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष And we're going to see you tomorrow at 9 o'clock. कल हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे 9 बजे I mean, with a wonderful message that the Lord has put in our heart. और एक बहुत ही खूबसूरत वचन के साथ जो खुदा बाप ने As हमारे you हृदय में finish दिया। this, जब हम इसे खत्म करते हैं, please do share this with someone. जरूर जरूर इसे In किसी a न किसी group के or साथ with शेयर someone so that कीजिएगा। it can be a blessing. किसी न किसी के साथ या ग्रुप के साथ कहीं ना कहीं इसे जरूर शेयर कीजिए। Thank you and shalom. शालोम और धन्यवाद।